आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अभी तक मैंने चैनल पर काफ़ी सारी रेसिपीज़ डाली हैं एंड आई होप दे आर वेरी वेरी यूजफुल टू यू गाइस. आई एम लाइकिंग द कमेंट्स एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक. So this week I'm going to present a very famous recipe which you normally enjoy in restaurants. जी हाँ, ज़्यादा गैस करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान रेसिपी है. इट्स दाल मखनी. आज हम देखेंगे कि हम इजीली घर पर दाल मखनी कैसे बना सकते हैं और वो ही स्वाद जो आप रेस्टोरेंट में पाते हैं वो घर बैठे पा सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, आई एम बैक इन द किचन. फटाफट ये देखते हैं हम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए दाल मखनी बनाने के लिए. So I've already boiled this urad dal and some rajma. So the quantity is, I have taken one bowl entirely. So the one bowl consists of, I think, more than half of urad dal and some rajmas to cover that one bowl. Normal butter I have taken. You can also take desi ghee. Desi ghee से भी वैसा ही flavor आता है जैसे butter से आता है. It's just that we normally taste dal makhni while we go in restaurants with butter. So that's the reason I've added butter. These are some green chilies. हरी मिर्च मैंने ली है. लाल मिर्च मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ because लाल मिर्च में कुछ added ingredients रहते हैं. So I prefer going with green chilies. So that's optional for you. You can take lal mirchi as well. So this is dal makhni masala. You can also take rajma masala or you can take kitchen king, whatever is available with you. This is fresh cream I have taken. You can also take curd instead of fresh cream. That's also up to you. And these are some grinded tomatoes. So around 3 of them. So making of dal makhni, I have already heated some ghee in my kadai. Normal ghee जो आप घर में use करते हैं, that's the same ghee I'm using. I won't be using any refined or any vegetable oil in it because वो flavor नहीं आता है. So I hadn't mentioned about the khada masalas. These are also optional in dal makhni, but still at the last moment I am adding some of them. You can skip it. So I'm adding 2 bay leaves. I'm adding 1 big elaichi, cinnamon, and some black pepper. Khada masalas are cooked. Time to add green chili and time to add our onions too. ये सब आप साथ में डालें और अनियन को यानी हमारी प्याज को तब तक पकाएं जब तक कि आपको एक ब्राउन कलर ना दिखे लगे. जैसा ही हल्का ब्राउनिश कलर आता है, as soon as you get to see that brown color, just add your makhni masala to it and let it cook for another 2 to 3 minutes. To keep the flavors intact for the khada masala, I am just covering this onion with a lid. Now I will remove this lid and see how the onions are. Nice aroma can be felt. I think the onions are done. It's a time to add your masala into this paste. So I'm just adding the masala. So I'm not adding here additional salt because I've already added salt while cooking my dal. So no need to add, just stir it well and allow it to rest for. You can now see the onions are done. In my previous videos also I've told you that the oil will come towards the side. जैसे ही oil आपका sides की तरफ आता है, that means your masala is cooked. You need not to worry. And now you can add the tomato puree to it. It's a time to add tomato puree and cook it till you see the oil coming towards the sides. आप देख सकते हैं मसाला पूरी तरह से कुक हो गया है. साइड्स पे ये मुझे घी दिख रहा है जो मैंने शुरू में डाला था. Now it's the time to add my dal into it. Just stir it before adding and just put it like this. Stir it well. Cook this dal for at least 7 to 8 minutes and cover it with a lid. After 7 minutes, we'll add cream to this dal. Before that, we should not do this because it will not absorb all the flavors immediately. After 7 to 8 minutes, you'll feel like कि सारे ingredients mix हो चुके हैं. And now it's the time to add our cream.
सो क्रीम भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास दही है आप दही ऐड कर सकते हैं। Stir it well again and let this cook for another 3 to 4 minutes. उससे क्रीम का फ्लेवर अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बटर हम एकदम लास्ट में डालेंगे। 7 minutes. You can see the consistency is perfect. The cream has been dissolved properly. Now it's the final time to add our yummy butter. आप इस टाइम पर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी बटर से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। So becomes rich. जो लोग डायबिटिक हैं या जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो इस बटर को अवॉइड कर सकते हैं। दे कैन यूज लिटिल ऑफ देसी घी इंस्टेड, कुछ फ्लेवर अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो। एंड आई थिंक माई यमी dal is ready. You can see it. And it's exactly the same जो आप जाकर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं।